So guys, so today we are going to start a new topic named black hole. This is our new science series. In this series, we are going to uh, understand some facts about the space and another concept of science. Like, this is our first video in the series of science, and a video twice a week will be coming on this series. So let's get started. So our first topic is black hole. So what is a black hole? So black hole is uh, the most dangerous object of the universe. वो universe का सबसे dangerous object है. Like, if any of the people who know here black hole, they know that it is very dangerous. Its gravity, there is gravity, its gravity cannot be handled by anything. It's so strong that even light cannot pass from him. You can see that the light rays, if are coming here, so this portion, entire portion is black, so the light also cannot escape here. The light also cannot escape. This much strong gravity the black hole holds. Because of this much strong gravity, it is named black hole, because there is no light going inside. There is no light going inside, so it is totally dark. So it is totally dark, then it is black, and it's like a circle. So this is called a black hole. So we will understand how a black hole becomes a black hole. So you can see this thing right over here. So there is the life of a star. So a black hole becomes from a massive star. Like, the star should be 2 to 3 times bigger, 2 to 1.5 times bigger than our sun. Then it will become the black hole. And if the star is average star like the sun, it will become the red giant, then a nebula, and then it will convert to a white dwarf. But in the case of massive stars, it is not fixed that we have only the black hole. It can either be a neutron star or a black hole. So let understand. So how do the star converts into a black hole? So let me explain you this process. So what happens, like, this is a star. So there is nuclear reaction going in its core, and the nuclear reaction से जो force आता है, like force, it goes out, and the gravity force compresses in. So like ये force उसको balance करके रखता है, then it balances and the star remains in a constant shape. But when the lifetime of the star almost have to less, then the star will burn the fuel, and if the star will burn the fuel, then it will become more big in size with less fuel, and it will eventually burn all of its fuel. And if जो फ्यूल बर्न हो रहा था उसका फोर्स नहीं रहेगा, तो ग्रेविटी का एक साइड से फोर्स आएगा, तो वो जो ग्रेविटी है, देन द स्टार कोलैप्सेस इन इट्स ओन ग्रेविटी. तो स्टार अपनी खुद की ग्रेविटी में समझ आएगा, एंड द स्टार will do a supernova. So some of the people do not know what is supernova here. So like, let me explain you. Like your balloon, for an example, the balloon, you consider it is a star. If you prick it and the air comes out, that is supernova, but on a very large scale. The supernova when happens, like एक star है, when it explodes like a bomb, like the firecrackers we use in our Diwali festival. So they explode and they releases their force and their smokes. So in the case of the star contains the radiations. The star contains the radiation, and the star emits out that radiation
and heat, and its heat waves, its solar flares, the star all releases this out, and like it becomes a very small tiny object equals to the size of earth, and it is small but it has more gravity. Like is a smaller thing will have a less gravity and a bigger thing will have a much bigger gravity. Why is that? Some of the people do confuse here, but I will explain you in a very obvious way. Like एक object के पास it has a big size, so if it has a big size and the mass of 2 kgs, so it density will be less, उसकी density कम होगी. और अगर एक ऑब्जेक्ट कम साइज में, लेस साइज में भी 2 kg mass है उसके अंदर, then its density will be increase, its density will be bigger, and if the density will be bigger then the gravity will be getting strong. Like एक star है, it is very big but it has only just the amount of 2 suns like mass, but there is an black hole which is like the amount of the size of like let's take the size of New Delhi. It will also have the mass of 2 suns, but you can see one sun in the size and one black hole of New Delhi, the same thing. 2 suns will be fitted also there, but the gravity will so increase and so increase that it will get really worse, and anything goes into a black hole cannot be come out. So this is all about black hole. Now let's understand, we have understand how a black hole is formed. Like when the supernova explodes, तो वो जो बचा हुआ remaining density है वो बन जाता है black hole. It becomes the black hole. Black hole बनता है. So after that we will learn the stages of the black hole. So if you see this portion here, this portion is known as event horizon. Event horizon. Event horizon. Anything floating in this event horizon can go into this point, but it can also not go into this point. So the point, what is that point? So this line is called so event horizon. So event horizon like have उसके आगे जो black line है, it is called singularity. Singularity. So all the objects of the black hole are on its event horizon. So now scientists have just one image, only one image. Even have we so advanced things of our modern day physics. We have many telescopes like the new JWST telescope which was launched by NASA in December 25, 2021. It also cannot tell us how a black hole looks, because it अगर उसमें कोई लाइट जा ही नहीं रही है then the spot is very black. So how do scientists उसको find कैसे करते हैं? Scientists find it like अगर एक black से एरिया में काफी सारे planets and objects अगर उसके revolve मूव कर रहे हैं, then scientists will assume that it is a black hole, and there are various methods to do it now. So there we have only one image of the black hole. So like you see this part, which is the orange one part, it is called the event horizon, and this part, exactly this part is the most heated, most radiated part of the black hole, because it is revolving so fast. In this, objects are revolving, and this even accretes the heat to 10 million or 20 million degrees. This is the amount of heat it generates. The
event horizon, and anything goes into singularity, it will go inside the black hole, and we don't know anything about it after that. So this is the stage of the black hole. What is the black hole, and about it you will get a little bit to know about the black hole now. So if you know something about black hole, so let's move ahead. So you might be a question, what is the average like density? So if we take a normal black hole and take 1 spoon out of it, the 1 spoon the 1 spoon mass will be according to like 100 or 200 elephants. So that is the density the black hole holds. This is the density, man. So like and there are like sometimes these अगर उसमें काफी एनर्जी हो गई है, then there are fountains of energies, like fountain, एनर्जी के फाउंटेन उससे निकलते हैं. These are called quasars. So you can read it much online about it. So like अगर इसमें जो हमारा इवेंट होराइजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट एंड द सिंगुलर और ब्लैक होल में काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया, then it explodes out its mass into two different, into the north and south direction, and it will be a glowing moment. So if you see the triangulum galaxy, in the triangulum galaxy we have, in the triangulum galaxy it has one black hole which emits its light, and it is so bright that the combined brightness of two galaxies like two small galaxies cannot be handle it. मतलब एक क्वाजार से इतनी लाइट निकल रही है कि दो गैलेक्सी की कंबाइंड लाइट भी उसके सामने कुछ नहीं है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी द ब्लैक होल excruciates. So there are some black holes we have here, like you can see, this is the Cygnus A black hole, Mizar X black hole, and the OJ287 black hole, but these are not and nothing when it comes to a black hole. You will see it, what we will see. So now we have talked about quasars, different types of black holes. Now let's talk about the types of black holes. So there are 4 types of black holes, but the 4th type is very less in number, so we will talk it about after. So first let's talk about the stellar black holes. So like how does stellar black holes की जो वो है उस पर लिमिट है. लाइक आई टेल यू फैक्ट, एक स्टार जो हमारा सबसे बड़ा स्टार है वो है TON618. अब वो अभी जो बड़ा है वो उसकी जो हमने इमेज का अंदाज़ा लगाया दैट इज़ 10 बिलियन ईयर्स अगो. ये 10 बिलियन ईयर्स पहले की फ़ोटो से हमने अंदाज़ा लगाया, बट अब तक तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया होगा. तो जो हमारा सबसे बड़ा ब्लैक होल होना चाहिए उसको इतना टाइम ही नहीं बना लिया गया कि वो अपने पूरे साइज तक पहुंच सके. अगर ब्लैक होल के केस में सिर्फ हमें कोई साइज की लिमिट नहीं दिखती है. अगर उसे जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसका मास भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. इट विल बी गेट मोर बिगर. सो जो TON618 है वो आज से 10 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा भी हो सकता है, जो वो अब है उससे ज़्यादा. So let me tell you fact, but in stellar black holes there is a limit. Why there is a limit, you may ask. So the stars which make the stellar black holes they सेल्फ हैव अ लिमिट. उनके ऊपर खुद एक लिमिट है विच इज कॉल्ड द एडिंगटन लिमिट which is called the Eddington limit. And in the Eddington limit and जो stars form हो रहे हैं उनके ऊपर भी लिमिट है. Why there is a limit? On planets also there is a limit. Like एक planet सिर्फ 10 Jupiters heavy हो सकता है. After it will convert into a star. And a star also has a limit of like 2 to 3
million solar mass solar suns. It is the limit of a star, but stellar black holes, they have a mass of 10 to 20 solar masses. मतलब 10 to 20 suns का उसके अंदर मास होता है stellar black holes. They are the small black holes. The small black holes are you can see about like a small black hole like of a 25 paise coin. It can also revolve a moon around it. The stellar black holes are not weak, they are much dense, they are much excruciating. But the stellar black holes are of 10 to 20 solar masses, and up to they can go to 80 solar masses. This is the limit. So the highest we have find is 78. एंड जो ये जो सोलर ब्लैक होल था जो 78 का था, इट वॉज वो एक अपने से 66 टाइम बड़े स्टार को अपने तरफ रिवॉल्व करते हुए बिट बाय बिट सक कर रहा था. सो यू कैन सी द लिमिट, you can see the excruciating gravity here of stellar black holes. Now intermediate black holes, so they have a mass of 100 to 1000 solar masses. So ये इनकी भी लिमिट है, बिकॉज स्टेलर ब्लैक होल्स की लिमिट है तो इनकी भी लिमिट है, बट द नेक्स्ट वन डजंट हैव अ लिमिट. सो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स 100 से 1000 सोलर मासेस के हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट बिकॉज दे आर द मिडल वंस. दे हैव कंज्यूम्ड लाइक 60 to 70 stars in their life and many planets and other things. They have a huge boundary like our black hole in the center of our galaxy. It doesn't fall into the two categories. In these two categories it doesn't fall, but the nearest black hole Betelgeuse, it falls into the intermediate category. हमसे जो सबसे पास Betelgeuse जो हमारा ब्लैक होल है वो इसमें आता है लाइक इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स में. सो नेक्स्ट इज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. सो इन दोनों के पास एक लिमिट है, दे हैव अ लिमिट, बट दिस वन डजंट हैव अ लिमिट. वो सीधे मिलियन टाइम्स सोलर मासेस की कैटेगरी में आते हैं कि भाई हम तो लेंगे काफी ऊंचा स्थान. इन दे हैव 100 to 1000, बट दे गोस लाइक severely to million solar masses. Now what can we say about these stars? So you understand. So we have that in the supermassive black holes they have a mass of million solar masses. उनके पास millions of solar mass का mass होता है. like उसमें काफी बड़े black holes होते हैं. they have a lot of उसने पता नहीं अपनी लाइफ स्पैन में कितने सारे स्टार्स, कितने सारे planets, how much they have the solar systems, the suns, the stars, the galaxies they have consumed, that they have become supermassive black holes. So in our galaxy, हमारे जो गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका नाम है सेजिटेरियस ए. और ये सेजिटेरियस ए लगभग ऑलमोस्ट 5 million सोलर मैसेस. 5 million मतलब 50 लाख सूरज का इसके पास मास है. And now let's move to the final category. Like let me tell you an example. गैलेक्सी OJ287 जो हमारी गैलेक्सी है OJ287 उसमें एक ब्लैक होल है. एंड वो हमारी क्या बोलते हैं जो सेजिटेरियस ए वो वाला हमारा जो
5 मिलियन सोलर मासेस का जो ब्लैक होल है उसको देख के आप काफी हैरान हो। उससे 40 टाइम्स बड़े ब्लैक होल को अपने सैटेलाइट के तौर पे घुमा रहा है। एंड वो जो ब्लैक होल जो घूम रहा है वो अकेले इतना बड़ा है कि हमारी पूरी जो हमारा जो सैजिटेरियस है उसका 40 गुना है। मतलब जो हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका 40 गुना वाला ब्लैक होल तो एक दूसरे ब्लैक होल का सिर्फ एक सैटेलाइट है। एंड अभी आप मानोगे कि वो सबसे बड़ा है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब वो कितना बड़ा है। तो अब ऐसे जो स्टार्स हैं इनके लिए हम क्या नाम निकाले। अब बताइए वो कितना बड़ा हो सकता है साइज में। जो वो उसको रिवॉल्व करा रहा है सैटेलाइट के तौर पे वो उससे 5000 गुना बड़ा है। 50,000 गुना बड़ा है। अब ऐसे जो ब्लैक होल्स हैं उनके लिए साइंटिस्ट कम अप विद अ न्यू वर्ड नेम्ड ultra massive black holes, and this is my favorite part. Say ultra massive black holes। और जो गैलेक्सी OJ287 का जो अभी मैंने आपको ब्लैक होल बताया जो कि सेजिटेरियस से 40 गुना बड़े को अपने सैटेलाइट के तौर पे घुमा रहा है वो भी कुछ नहीं है। द लार्जेस्ट ब्लैक होल इन द यूनिवर्स इज TON 618 with 66 billion solar masses। अभी जो हमने बात करी थी गैलेक्सी OJ287 वाले की वो इससे लगभग अगर हम पहाड़ के सामने माउंट एवरेस्ट के सामने एक चींटी को रखेंगे इतना छोटा है। TON 618 इतना बड़ा है। और ये तो उससे 10 बिलियन साल पहले की फोटो से अंदाजा लगाया। मतलब 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड फोटो से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं। तो अब तक तो कितना साइज में बढ़ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू TON 618 ब्लैक होल। you can see largest known black hole in the known universe। मास कितना 66 बिलियन सोलर मासेस। मतलब 66 सूरज इसके अंदर समा सकते हैं इतना तो इसमें मास है। रेडियस 1300 AU। जो ये 32 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सोलर सिस्टम लिखा है एक्चुअली इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। रेडियस 1300 AU मीन्स क्या होता है जो पृथ्वी से और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें 1 AU होता है। अब उसको आप कर दो 1300 गुना। इतना तो इसका बस इवेंट होराइजन जो हमने इवेंट होराइजन बताया था वो है। इसकी लिमिट वी कैनॉट सी द लिमिट। यू कैन सी ब्राइटनेस कितनी है इसकी। ब्राइटनेस इज 10 टू द पावर 40 वॉट्स। मतलब 140 ट्रिलियन गुना हमारा जो सन है उससे ब्राइटनेस है इसकी। अब इतने बड़े ब्लैक होल को लार्जेस्ट ब्लैक होल तो बोलेंगे ही ना। और इसकी एज 10.4 बिलियन ईयर्स है। तो मैंने आपको बोला था ना कि इसकी एज 10.4 बिलियन ईयर्स है। तो ये उसकी 10 साल पहले की इमेज है। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ ये उसकी 10 बिलियन साल पहले की इमेज है। उसके आधार पे जो आपने डाटा निकाला है वो है। अब तो इसका साइज काफी बड़ा हो गया होगा। और द लार्जेस्ट नोन ब्लैक होल जो TON लार्जेस्ट नोन ब्लैक होल इसका जो मास है वो ट्राइंगुलम गैलेक्सी जो है जिसमें मैं आपको एक स्टार बता रहा था जो कि 2 गैलेक्सी से ज्यादा क्वाजार निकाल रहा था उस पूरी गैलेक्सी से भी बड़ा सिर्फ एक ब्लैक होल है। और आपको बता दूं ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से 2 से 3 टाइम्स बड़ी है। अब इतना बड़ा अगर हमारे पास जो ब्लैक होल है TON 618 so it is the biggest black hole। और अभी इसकी कोई लिमिट नहीं है because I have given you in a time graph there is no limit for black holes। Let me explain it। This is the mass of the black hole।
हमें जो मास उतना ही बढ़ेगा, मास उतना ही बढ़ेगा जितना टाइम ज्यादा जाएगा। अगर टाइम आगे गया तो मास और भी आगे जाएगा, अगर टाइम ही रुक जाएगा तो मास भी उधर ही रुक जाएगा। Like we can see the amount of energy it has, 66 billion solar masses, इतना इसके अंदर अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है। सो I hope you understand the concept of black hole, and I have just tell you a little bit things about the black hole. So I hope you understand all the things about the black hole, and you can check out more information of the black hole on Wikipedia or other sources. So until then, goodbye, take care, and Jai Hind and Jai Bharat.